नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पर जाके। और अगर आपका कोई भी सवाल हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल पोस्ट कर सकते हैं, उसे हम इसी कार्यक्रम में लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एक और विकल्प है आपके पास, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 1800 120 4775। आई रिपीट, 1800 120 4775। कॉल करके आप अपने शेयर बाजार से जुड़े प्रश्न जो है वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे खास मेहमान हैं आज मिस्टर अमर देव सिंह, हेड एडवाइजरी एट एंजल वन। वेरी गुड आफ्टरनून अमर सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Yeah, thank you for having me on the show. अमर जी, आज बाजार गैप डाउन खुलने के बाद अब एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी इज डाउन जस्ट 20 पॉइंट्स नाउ, अ गुड रिकवरी इन द बैंकिंग स्पेस। ऐसे में आपका व्यू क्या बन रहा है बाजार पे? जो रिकवरी है काफी शॉर्ट लिव्ड है, बट डू यू सी इट ब्रेकिंग अबाउट 20,000 लेवल्स इन नियर टर्म? Yeah, I would say that जिस तरह की हम लोगों ने एक volatility देखी है, that was on expected lines also because of the going tensions between Israel and Palestine. तो जी। कहीं ना कहीं और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी जिस तरह से यू सी दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव आल्सो रैलीड, सो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि ये जो इशू है बहुत ज्यादा ये मतलब और भी कंट्रीज जो हैं वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। तो इसके लिए आप अच्छा। देख रहे होंगे कि यूएस प्रेसिडेंट और अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर दे ऑल बीन विजिटिंग इजराइल टू सी हाउ दे कैन सॉर्ट दिस मैटर। तो वो एक कंसर्न है, बट या डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि इन स्पाइट ऑफ सच नेगेटिव न्यूज ऑल्सो इंडियन मार्केट्स हैव हेल्ड ऑन टू। तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली मार्केट्स में दिखाता है। एंड यू राइटली सेड वी हैव सीन सम गुड पुल बैक इन दी बैंकिंग स्पेस एज वेल। बट इट्स मोर और लेस, यदि मैं फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करूं तो अब अर्निंग सीजन का भी एक इम्पैक्ट रहेगा जी। मार्केट्स पे, बट दैट शुड बी, आई वुड से ओवरऑल दैट शुड बी पॉजिटिव ओनली। बट वील हैव टू वॉच आउट व्हाट आर दीज फैक्टर्स व्हिच कैन हैव एन इम्पैक्ट। टेक्निकली मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में वी आर सीइंग सम सॉर्ट ऑफ choppy trading sessions. So you can say between 19,200, 300, that's a very strong support zone on the downside. And somewhere, if you ask me on the upside, so around 19,850, 19,900, that's an immediate zone of resistance. तो कहीं ना कहीं markets इस range में trade करता हुआ हमें दिख रहा है। Sustaining about 20,000, I would say, would be slightly difficult for the markets, but until unless we don't have some major negative news that the markets have not factored in, because अभी जो टेंशन्स चल रहे हैं उसको मार्केट्स ने एक अच्छे तरीके से फैक्टर इन कर लिया है, और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं दैट्स बीइंग एंटिसिपेटेड, सो वील हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। अमर सर, मेनी पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट आईटी सेक्टर। बहुत उम्मीदें हैं उन आईटी स्पेस से, खरीद भी रहे हैं डिप्स पे, लेकिन जिस हिसाब से नतीजे आए हैं ऑफ द लार्ज कैप्स वर्सेस द मिड कैप्स व्हिच हैव रियली डन वेल ऑन अर्निंग फ्रंट, बहुत ही people are confused where to really get into these IT stocks, the large cap space or the mid cap ones. Looking at the IT, if I look at the IT space, what we are seeing, first of all, if I'm talking about the Nifty IT, so Nifty IT में what we are seeing is that कहीं ना कहीं वो एक हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है फिलहाल निफ्टी आईटी में। और यदि मैं स्टॉक्स की बात करूं, सबसे पहले यदि मैं आपके जो लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करूं, तो इन्फोसिस इज क्लियरली शोइंग दैट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर इन अ हरी। So it's Right. more of a range play between 1550 on the upside and 1300, 1350 on the downside. That's the range that is being clearly indicated for Infosys. यदि मैं अदर स्टॉक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल L&T टेक्नोलॉजी, we've seen some sharp correction in the stock post a significant rally. तो कहीं ना कहीं वहां एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और एक्सेप्शन में यदि मैं देखूं तो माइंडट्री में एक एक्सेप्शनल मूव हमें आज फिलहाल देखने को मिल रहा है। बट अगेन मोस्ट ऑफ दी आईटी स्टॉक्स, चाहे वो परसिस्टेंट इज स्टिल होल्डिंग अ वेरी स्ट्रांग, वेरी फर्म, वन ऑफ दी stocks which has not corrected, trading at its all-time high. So that's more or less an exception. TCS again मैं बात करूं तो clearly TCS is also most likely like Infosys. तो है क्या कि जो यूएस मार्केट्स में
overall there are concerns, and that has been impacted also, that how the revenues would shape up for the IT companies both from Europe and US. तो वो सब जी concerns कहीं ना कहीं हैं, और वो सब टेक्निकली भी चार्ट्स पे दिख रहे हैं. So as far राइट. as TCS की बात करूं तो somewhere around 3300, 3350, that's a very strong support zone. Upside 3600, 3650 is a very strong resistance zone. So more or less ऐसा नहीं है कि we'll see some major correction until unless the market में overall markets get impacted very negatively because of some unexpected happening. Otherwise, we could see some consolidation happening in the IT space. So investors need to take it easy and not get into buying these stocks in a hurry, because they are giving you quite a good scope of entering at lower levels. चलिए सर, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं. हमारे फर्स्ट व्यूअर हमें पटना से लिखते हैं, नरेश कुमार उनका नाम है. बंधन बैंक के 600 शेयर एट द रेट ऑफ 252. काफी लॉस में हूँ, क्या करना चाहिए? नतीजे भी अच्छे नहीं है, नतीजे बेहतर तो थे लेकिन एनपीए के फ्रंट पे अभी भी बहुत चिंता है. देखिए, बंधन बैंक जैसा मैं इसे चार्ट्स पे देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये 250 260 पे जाके इसमें एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक जो है उससे पहले इसने एक अच्छी रैली दी थी ऑलमोस्ट 200 से 250 260, एंड अगेन नाउ इट्स इन अ करेक्शन फेज. तो यदि मैं जी. जरा टेक्निकली चार्ट्स पे देखूं तो समवेयर इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई, सो इट हैड अ बॉटम ऑफ अराउंड 200. तो 200 जो है वो काफी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. सो 200 से 210 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. So we could expect some pullback, but not much to read in this stock as of now, because यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं, मंथली चार्ट्स पे देखूं, क्वार्टरली पे देखूं, वीकली पे देखूं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसमें कोई मेजर अपसाइड फिलहाल दिख नहीं रहा है until unless the stock sustains above the 260 mark. तो यदि ये स्टॉक 260 के ऊपर सस्टेन करता है, then we could say that there has been a significant change in trend. Otherwise, I will say कि more or less that trend, I will not say it is down, but more it's in consolidation phase. तो नरेश जी, कंसोलिडेशन फेज में है बंधन बैंक, हम सब जानते हैं. नतीजे कल ही आए थे और आज एक इम्पैक्ट का देखने को मिला. सो 260 का एक लेवल है जो काफी क्रूशियल है, एक टफ रेजिस्टेंस भी है. अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो अमर जी को लगता है कि उसके बाद एक मूव देखने को मिलेगा. तो फिलहाल तो आपके लिए ये कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है. नाउ इट इज ऑन यू, यू वांट टू एग्जिट और यू वांट टू स्टे पुट. तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा. पर फॉर नाउ 260 लुक्स ए क्रूशियल लेवल, उसमें ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा फिलहाल के. सचिन हमें लिखते हैं लखनऊ से, पीसीबीएल के 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 173, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए? तो पीसीबीएल की मैं बात करूं तो ये एक स्टॉक है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि बंधन बैंक का मोर और लेस लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड डाउन का नहीं होके कंसोलिडेशन पे है. पीसीबीएल इज अ कंप्लीट रिवर्स. इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी स्ट्रांग है ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स, बी इट मंथली चार्ट्स, क्वार्टरली चार्ट्स, इवन वीकली चार्ट्स. Short term is we are seeing some sort of consolidation, some sort of I would say profit booking coming in. तो ये एक लेवल है जहां one can look at least booking 50% profits, और रेस्ट आप जो अपने स्टॉक है, पोजीशन है, उसको you can hold it from a long term perspective, because till that time the stock does not start trading below 180 level, we can confidently say that there is no trend change. So that's a strategy which you can apply. That will help you in case have some profits booked as well, in case we do see some correction, but the long term trend remains strong for the stock. तो सचिन जी, आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी. 1000 शेयर है आपके पास, तो 500 शेयर आप करंट लेवल के आसपास बेच सकते हैं. और लॉन्ग टर्म व्यू काफी स्ट्रांग है, तो बाकी के जो हिस्सा है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ऐसे अमर जी मानते हैं. तो फॉर नाउ इट इज that you book out 50% of your portfolio which is allocated to this stock. बाकी आप होल्ड करें. साक्षी हमें लिखती है मुंबई से, अपोलो टायर्स के 700 शेयर एट द रेट ऑफ 437, एक साल का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो I would say automotive industry has been performing exceedingly well, and the tire stocks including Apollo, they witnessed a significant rally almost if I go back and see, so last year July से the stock has more than doubled. So कहीं ना कहीं एक profit booking is also a healthy sign of any market, any stock, and the stock continues to trade at record highs. But yes, you have entered at a slightly higher level, but
ये जो करंट लेवल्स हैं, these are important crucial support zones for the stock from a long term Okay. chart, from a medium term perspective. तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि the stock is having very strong base at the lower Okay. levels. However, on the upside, once the stock starts sustaining above the 395 400 level, that's very important, very crucial. So Okay. 395 400 के ऊपर stock sustain करता है, then we could see an upside move. Otherwise, the stock could go in for some consolidation, or on the downside, the stock has got very strong support coming around the 350 360 zone. So वो एक major support zone है जहां the stock is finding very strong support. But Okay. upside, the stock needs to sustain above 395 400. So you can hold on to your position. Overall, the long-term trend remains positive, but any major move के लिए 395 400 के ऊपर consistently the stock will have to sustain. जी, तो साक्षी जी, आप अपोलो टायर्स के स्टॉक को होल्ड कर सकती हैं। एक काफी अच्छा सपोर्ट जो है वो 350 जोन के आसपास है, लेकिन 380 390 का लेवल एक काफी क्रूशियल लेवल है ऑन द अपसाइड। इफ इट ब्रेक्स अबाउट दैट एंड सस्टेन्स अबाउट दैट, देन यू कैन सी हायर लेवल्स। आपकी जो खरीद है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पे है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 1 साल का व्यू है, तो पेशेंस तो आप रखती ही हैं शायद, तो आप इसको होल्ड करें तो बेहतर रहेगा। अमर जी, कुछ सवाल हमारे पास यूट्यूब के जरिए आए हैं, उनको ले लेते हैं। योगेश सिंह जी का सवाल है, मैम प्लीज आस्क अमर जी अबाउट रिको ऑटो शेयर्स। बाइंग प्राइस उनका 93 है, शुड आई होल्ड इट और एग्जिट? आई हैव बॉट इट फॉर ट्रेडिंग। Okay, so you bought it for trading. तो देखिए, रिको शेयर्स में recently we've seen some good move over the last couple of days. तो almost from 80, 85, 84, 85 levels. Currently it's around 92, 93. तो आपके बाइंग लेवल के आसपास ही है, तो you can hold on to the stock. और बस एक चीज लेवल का आप इस पे ध्यान देंगे, 88 is a very important level for the stock. 88 के नीचे जाता है, then we could see some selling pressure. Otherwise, there is a possibility that we could see an up move in the stock. For sustained trade above 94, 95, then you can see the stock moving towards 98 and 100 levels. तो ये भी जो स्टॉक है, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं, तो समवेयर in 2017-18 the stock had made a high, similar high. And then again we are seeing the stock correcting from that level. तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 9500 जोन जो है वो काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है इस स्टॉक के लिए। और यदि ये 9500 के ऊपर सस्टेन करता है, then you can expect a major rally happening in the stock. Major rally happening if the stock moves above 9500 and sustains above that level. 88 is a good level technically, जिसके नीचे इसे काफी strong support है। Last few days, if you see, volumes have also been significantly higher in few days. So you can hold on to your stock as of now. कल्पेश चौकसी जी का सवाल आया है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए, मेरी पोजीशन है। So looking at Tilak Nagar Industries, I'll just give a technical view here that if you have bought at the current levels, or if you are in profit, then you should definitely look at exiting. Because ये जो daily charts पे, if we don't see the stock sustaining above 225 230 levels के ऊपर sustain नहीं करता है, then we could see some correction in the stock. But the long-term trend remains strong for the stock. Short-term, we are seeing some sort of consolidation. And on the downside, यदि मैं बात करूं तो somewhere around 195 200, that's a major support zone. तो आप ये समझिए कि 195 200 on the downside, 225 230 on the upside. तो यदि आप profit में, तो you should definitely look at booking profits, क्योंकि 225 30 के ऊपर then only you can see some major rally. Otherwise, we could see the stock going in for consolidation. मनोज पांसे जी का सवाल तो नहीं है, उन्होंने आपको हैप्पी नवरात्रि विश किया है। Thank you, and wishing him the same. Yeah. Right. नंदलाल जी का सवाल है, अगेन ही, यस, गोदरेज एग्रोवेट पर 2 साल के लिए व्यू चाहते हैं वो, गोदरेज एग्रोवेट। तो गोदरेज एग्रोवेट की मैं बात करूं तो व्हाट वी सीन इज दैट ये एक स्टॉक है जिसने मार्केट्स की जो रैली हुई है उसमें स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और ये कहीं ना कहीं जाके हायर लेवल्स पे इसमें एक सेलिंग आ जाती है। तो समवेयर इफ यू आस्क मी 500 520
that's a very strong zone of resistance. और stock has corrected. If I go back in time, तो करीब 700 से correct करके फिर ये we saw the stock coming to almost 400 levels. Currently it's around 480 levels. तो आप ये समझिए कि once the stock starts sustaining above 520, 530 levels, then you can expect a major trend change in the stock. Because अभी कुछ दिन पहले the stock witnessed a significant move. यदि आप देखेंगे तो on 6th of October from 477, the stock made a high of 522, closed around 515, and that also on extremely high volumes. तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि there is something which is happening in the stock, but again the stock is not able to sustain. It has corrected to 480. So you can mark these levels 520, 530. That's a very, very crucial zone for this stock. उसके ऊपर sustain करता है, then we can say that the trend has changed for the stock from a medium term perspective, and then you can expect some upside rally in the stock. Downside, the stock has now found very strong support base around the 450 levels. So 450 levels के नीचे करेक्ट करता हुआ फिलहाल ये नहीं देखा। इंदौर से हमें लिखते हैं संदीप कुमार जी, टाइटन कंपनी के 100 शेयर एट द रेट ऑफ 3261 जानना चाहते हैं, रखे या बेच दे? 3261. So see, Titan is definitely a long term buying, but at what level, that's very important. Because क्या होता है कि जो करंट लेवल पे अभी आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक ओवरहीटेड मार्केट को दिखा रहा है टाइटन में। और यदि मैं इसे चार्ट्स पे देखूं तो ऑन 20th September it had made a high of 3349, and then it had corrected all the way to 3100 something, 14, and then again recent high it had made of almost 3328, 29. तो कहीं ना कहीं 3330, 3350, that's a very strong resistance zone for the stock. और जो daily charts पे it's showing more or less consolidation. So you can look at as and major support, as I said, is 300 and 3100 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। उससे पहले की सपोर्ट की मैं बात करूं तो somewhere around 3200 is a major support. So you should look at booking profits, because till the time it does not sustain above the 3350, we could see the stock in for consolidation. संदीप जी, फॉर नाउ इट इज अ होल्ड, बट दिस क्रूशियल लेवल्स जो आपको सर ने बताई है उनका जरूर ध्यान रखिएगा। सोने के दाम इंटरनेशनल मार्केट में अभी तो ऊपर है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट इज गोइंग ऑन। जो सेफ हेवन माना जाता है सोना, उसके चलते हुए जो हम ज्वेलरी स्टॉक्स है इंडिया में लिस्टेड हुई उनमें काफी अच्छा रुझान दिख रहे हैं। पर फॉर नाउ इट्स इज अ होल्ड, यू कीप ऑन होल्डिंग। अगर आपका लंबा अवधि का नजरिया है तो यू कैन कीप ऑन होल्डिंग, लेकिन अगर आप बहुत छोटी अवधि में है तो फिर आपको लेवल्स जो अमर सर ने सुझाई है उनको प्लीज ध्यान में रखिएगा। कल्पेश चौकसी का हमने सवाल अभी लिया था तिलक नगर पे। ही हैज सेंड, ओके, थैंक यू सर फॉर योर आंसर। तिलक नगर पे एडवाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि, सो ही सेंड यू नवरात्रि विशेस। विवेक भाटिया जी का सवाल आया है, सर विप्रो फ्यूचर सेल किया है 413 में, तो क्या करना चाहिए? So I think you have sold at a very good level. So you are short in the Wipro futures. Currently it's around 394.95. So I would recommend that if I look at the charts, so somewhere around the current level, because यदि मैं इसको charts पे देखूं तो it is around, it has breached some major support zone. तो आप क्या कर सकते हैं, 400, 402 का 403 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेल कीजिए। अब आज यदि आप आज ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, then you can think about it, because markets, the way the stock has corrected, so that's a zone of resistance. तो 402, 403 का ट्रेल कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू कैन लुक एट बुकिंग प्रॉफिट्स, बिकॉज टेक्निकली इफ यू आस्क मी, जैसे मैंने आईटी सेक्टर में काफी स्टॉक्स की बात की, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं सब में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कोई वैसा पॉजिटिव ट्रेंड हमें नहीं देखने को मिल रहा है जैसा हमें परसिस्टेंट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। दैट्स वन ऑफ द एक्सेप्शंस। कोमल कुमार जी का सवाल है, सर निफ्टी का कॉल खरीद ले कैसा रहेगा? सो यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अभी यदि आज की बात करें तो आज एक्सपायरी भी है, तो मोर और लेस वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ
movement happening in Nifty on the daily chart and the intraday chart. So I would recommend that you should be slightly cautious because जो higher levels हैं आज के, it's around 625, 19,006. I'm talking about the spot. 19,620-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है. 19,650, 660. That's a very strong zone of resistance for Nifty. तो उसके ऊपर आज नहीं ट्रेड करता है तो we could see some selling pressure. So on the buying side you should be slightly careful. Yes, since yesterday the stock has corrected and from the lows of the day it has rallied significantly. Almost हमने 130-140 पॉइंट की रैली निफ्टी में from the lows of the day आज देखा है. जी, सीमा जी का सवाल है नोएडा से. जीएनएफसी के 500 शेयर है उनके पास एट द रेट ऑफ 651. इसमें क्या करना चाहिए? 651 है currently. It's around 660 odd levels. So ये जो लेवल है यदि आप चार्ट्स पे देखेंगे तो earlier also if I look at so somewhere around 660 is a crucial support zone. On the upside the stock recently had made almost 672 673 levels. और यदि मैं जरा बैक में भी जाके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी चार्ट्स पे देखूं तो मई में भी द स्टॉक हैड मेड अ हाई. मई 2023 में 666 का हाई एक स्टॉक ने बनाया था. तो क्लियरली व्हाट इट टेल्स मी कि 665 670 675 ये 10 रुपीज का एक जो जोन है दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फॉर द स्टॉक. So till the time the stock does not breach that level, we could see some sort of consolidation also and some profit booking happening. Currently, you can hold your position because the trend overall remains positive. But for any meaningful rally, the stock needs to sustain above the 665, 675 zone. On the downside, however, the stock has got good support coming around the 640, 645 zone. तो सीमा जी फिलहाल तो आप होल्ड कर सकती हैं, लेकिन जो लेवल्स आपको सर ने बताए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा. 65-70 इज अ क्रूशियल लेवल जिसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो ही एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा. 635-40 इज अ लेवल व्हिच इज अ सपोर्ट लेवल that you have to keep in mind. आशीष कुमार जी का सवाल है रांची से. HCL टेक के 200 शेयर एट द रेट ऑफ 1234. बड़ा अच्छा सीक्वेंस बनाया है 1234. एक साल का व्यू है, क्या करें? देखिए HCL टेक if you ask me IT पैक में comparatively it is better on the charts when I look at Infosys or TCS. Technically on the charts this is better and that's the reason the stock is trading close to its record highs. तो कहीं ना कहीं इसे आप होल्ड कर सकते हैं. बट क्या होता है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं तो उसमें मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट की एंड ट्रेंड स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट की ट्रेंड जो है वो कितना स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में. तो इसमें ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है बट द मोमेंटम इज नॉट दैट मच. तो व्हाट इट इफेक्टिवली मींस इज कि कहीं ना कहीं हमें एक कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिलेगा. हाउएवर डाउनसाइड इज वेरी इज गॉट गुड सपोर्ट. तो इफ यू आस्क मी सपोर्ट तो समवेयर अराउंड 1200 1220 इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट जोन. और अपसाइड में इफ यू आस्क मी सो समवेयर अराउंड 1300 1320 that's a resistance zone. So you can hold on to your stock once it starts sustaining even above 1280 levels. तो इसके बाद इसमें आप एक अच्छी 30 पॉइंट की 40 पॉइंट की मूव देख सकते हैं. 1320 के ऊपर सस्टेन करेगा देन ओनली फर्दर मेजर रैली होगी. अदरवाइज क्या होगा कि स्टॉक विल गो इन फॉर कंसोलिडेशन बिटवीन 1200 एंड 1300. तो आशीष जी आप फिलहाल के लिए तो होल्ड कर सकते हैं. आपका व्यू एक साल का है तो आप इस स्टॉक को होल्ड करें. जो लेवल्स आपको अमर सर ने सुझाई है उनको जरूर ध्यान में रखिएगा. किरण का सवाल आया है यूट्यूब के जरिए. सर सीजी पावर आपका व्यू चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. Okay, CG Power. So if I look at CG Power, this stock has been a major, I would say, multi-bagger sort of stock. Right. So now what we are seeing is we are seeing some sort of correction. So almost from 450 levels, the stock is around 380 levels. तो कहीं ना कहीं इसका जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म जो स्ट्रक्चर है उसमें एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है. तो वो बताता है कि द स्टॉक कुड करेक्ट फर्दर. नाउ क्रूशियल जोन ऑफ सपोर्ट इफ यू आस्क मी तो इट इज अराउंड 350 levels.
सो 350 जो है वो काफी इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। उस लेवल पे आता है देन यू कैन मे बी लुक एट एंटरिंग इनटू, बिकॉज उसमें आपका फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो है वो ज्यादा अच्छा बनेगा। एंड ऑल्सो डेली चार्ट्स अभी मैं देखूं तो दे आर वेरी नेगेटिव। तो व्हाट इट मीन्स इज कि यदि एक पुल बैक आती भी है तो कहीं ना कहीं फिर एक करेक्शन आएगा। तो यू शुड वेट फॉर दोज लेवल्स अराउंड 350 355, दोज लेवल्स वहां आके स्टॉक सस्टेन करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सम good upside in the stock, because long term charts are positive but medium term and short term charts are quite negative for this. तो इसमें एक पुल बैक आएगा भी, तो वो कितना सस्टेन करता है, that's a question. राजीव सनवाल जी का सवाल ले लेते हैं जल्दी से। पीएनबी गिल्ड्स, कैन इट बी बॉट एट करंट मार्केट प्राइस? एंड आई हैव आईआरबी इंफ्रा एट द रेट ऑफ 34 रुपीज ईच शेयर। टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? सो टॉकिंग अबाउट पीएनबी गिल्ड्स में हम लोगों ने बहुत अच्छी तेजी देखी, ऑलमोस्ट 50% की रैली ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स हम लोगों ने देखा है। एंड इफ आई गो बैक इन टाइम तो कहीं ना कहीं इट्स ट्रेडिंग एट इट्स रिकॉर्ड हाइज ऑल्सो। So that clearly tells me कि the stock is definitely very strong on the long term chart. So yes, इसमें जब भी आप buying opportunity आप देख सकते हैं, you have to remember that the stock has got very strong support base, जो पहले इसका एक resistance होता था, तो somewhere between 85-90 now that's a very strong support base for the stock. And the stock is strong on the long term charts, so that is very clear. So, but at the same time, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि whenever any stock trades at record highs, so you see a lot of volatility in the stock, so you should be prepared for that. But since the stock is sustaining above this level, that's a positive sign. So, अब क्या है the stock? For example, we have the weekly closing tomorrow, so you should see whether it closes above the current levels. So, above 95. 98 के ऊपर क्लोजिंग होती है, नेक्स्ट वीक उसका हाई जो इस वीक का हाई है दैट इज रफली अराउंड 102 राइट नाउ, 102 103, उसके ऊपर भी स्टॉक सस्टेन करने लगता है, मतलब द ट्रेंड इज वेरी स्ट्रांग एंड द स्टॉक कैन रैली देन टुवर्ड्स 115 120 लेवल्स. Okay, and the other question is on IRB Infra. He has bought at 34 rupees. He wants to know target and stop loss. See, IRB Infra में yesterday there was a major move, but the stock somehow closed lower. So the high was 36.55. It's currently around 35. Yesterday volumes were very high. If I go back in time, कहीं मैं इसको पीछे जाके देखता हूँ on the charts, so the stock is definitely strong on the long term charts. There's no doubt about it. But for any significant rally, because इसको मैं जरा सितंबर में जाके देखता हूं, तो सितंबर 11th को इसने 35 का हाई बनाया था एंड देन द स्टॉक करेक्टेड ऑल द वे टुवर्ड्स 28 29. करंटली अगेन इज ट्रेडिंग अबव 35, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. तो सस्टेनिंग अबव 35 36 इज वेरी क्रूशियल. सस्टेनिंग अबव दैट लेवल देन द स्टॉक डेफिनेटली कैन रैली टुवर्ड्स 45 levels or so. On the downside, the stock has got very strong support coming around the 28. तो आपका जो stop loss है वो 28 के नीचे होना चाहिए. If the stock sustains above 36, 37, then you can expect some good rally further in the stock. अमर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. Thank you and wishing you the same. थैंक यू सो मच सर. तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार आपको फिर याद दिला दें कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे. हमारा नंबर है 1800-120-4775. आई रिपीट 1800-120-4775. आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके जागरण बिजनेस के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं. उसे हम, अब कार्यक्रम तो खत्म हो चुका है, उसे हम अगले दिन लेने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि कल है. आप के सवाल हम कल इसी टाइम 1 से 1:30 बजे के बीच में ले सकते हैं. तो अपने सवाल पोस्ट करना ना भूलिएगा. एंड बी एक्टिव ऑन यूट्यूब सो दैट योर क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड ऑन टाइम. तो आज के लिए इतना ही. कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.